Okay. Mr. Yadav, thank you so much for joining us. Varun, we have Mr. Yogendra Yadav too with us. Thank you so much for joining us, sir. And it is honor to have you in our channel. Sir, the first question I wanted to ask you is, what really went wrong in Chhattisgarh? What really is going wrong in Madhya Pradesh? Congress was so sure. It's not clear what the situation in Chhattisgarh is. As I look at the trends in front of my eyes, one channel is reporting 51 seats for Congress, the other is reporting 48. So Chhattisgarh ke bare mein abhi let's not be very sure and confident of what is happening. As of now, it seems Congress is kind of scraping through. Madhya Pradesh is a real issue for Congress to worry about, because this is an election that Congress could have won, Congress should have won. There was a clear sense of fatigue, voters' fatigue. It was not a anger when I traveled in Madhya Pradesh. It's not anger with Shivraj Chauhan, but there was a sense of fatigue. Ye bas ho gaya, ab bas. Why could Congress not capitalize on this sentiment, given the fact that Congress had almost won the last time, that Congress was deprived through the back door, and there was voter sympathy. The Congress had a clear leader. And if in that context Congress cannot win this election, then there seriously is something wrong. Is it Congress's organizational inability? Generally not, because from what I saw, Congress won this election at this level in an organizational sense which was slightly better than last time. What to my mind has gone wrong with Congress is primarily lack of an overall strategy. BJP brought in a strategy. Congress had many things to do wrong, but it did not. For example, Madhya Pradesh was witnessing a surge of the OBCs for the first time. And here was an opportunity for Congress to align with it and to take, and for the first time to become the carrier of wonder rather than being the reluctant partner. Congress, to my mind, missed that chance and ended up with even less OBC tickets than the BJP. Similarly, from the trend so far, it seems that Congress is not doing well in the scheduled tribe areas, which have traditionally been Congress's stronghold. That is indeed something that should worry the Congress. Even in the Mahakaushal and Nimar areas, which have traditionally been Congress's stronghold, it's not doing well. So, to my mind, Congress's inability to align well with its traditional and potential voters, the scheduled tribe and the OBC in this instance. And secondly, absence of an overall narrative, communication. The Congress came up with its current piece, but in terms of combating BJP's communicative strategy, Congress didn't have very much in Madhya Pradesh. These are two things which I think went wrong in an election which was closer than it looks now, which Congress could have won, given voters' fatigue. Normally, we say that, if there is no much anti-incumbency, if the government has done well, and if the campaign has been reasonably good, then the chances are the party comes back. You see, this concept of anti-incumbency, this concept of reasonably fair campaign, are these concepts going haywire now? Because, see, end of the day, let's look at it. Gaylord, there was a reasonable anti-incumbency, but still, it was well within the control. As far as Bhupesh Baghel is concerned, the anti-incumbency was almost not existent. As far as Shivraj Singh Chauhan is concerned, there was tremendous amount of anti-incumbency. So this entire concept of anti-incumbency has it become irrelevant from Indian politics? I wouldn't say so. To my mind, anti-incumbency is not a natural reflex of the voters. It happens as and when governments perform poorly and are seen to be performing poorly. In the case of Rajasthan, I did not feel that there was a strong anti-incumbency against the Rajasthan government. Correct. Or against Ashok Gehlot as the chief minister. However,
there was strong anti-incumbency against the MLAs. Did the Congress manage to attend to this? Could Congress take bold decisions organizationally? To my mind, they could not. And that is clearly one reason why they may have suffered. In Rajasthan, I can see two or three things which have not to do with the performance of Gehlot government. One, the inability to drop the rebel MLAs. That should have been dropped. Number two, failure to strike some very simple and obvious alliances, two of which suggested themselves. One was with CPM, which is in a position to influence about 10 seats in the Shekhawati region. CPM needed to be given 3 or 4. Somehow the alliance can take place. And the second, even more important, was a possible coalition with Bharatiya Adivasi Party, BAP, in the South Rajasthan tribal belt, especially the Bhil belt, where the party could have influenced about 15 seats. I don't have exact data right now, but to my mind, just these two alliances alone would have made enough difference, because unlike in the past, Congress is not losing very badly. As of now, we are looking at about 80-100 situation, which is to say, if 10 seats had changed hands, this would have been an even match. And these two alliances account for more than those 10 seats. Sir, last question before I hand it over to you. So, sir, last question I wanted to ask you. Sir, if I say that Baghel lost against Modi, if I say that Kamal Nath lost against Modi, if I say Gehlot lost against Modi, will I be right, sir? Because there were no strong leaders for Bharatiya Janata Party in any of these states. Like once upon a time, Congress never had strong leaders in any of the states. There was this one large leader. If I say that it was Modi against everybody, would that be correct? I don't think that's a correct reading. First of all, I think we should not rush to conclude that Baghel has lost. As of now, the data doesn't support it. It may change the situation. You may have more updated information than I do. As of now, I would not draw a conclusion on Chhattisgarh. As for Madhya Pradesh and Rajasthan, yes, BJP is winning. And more than BJP winning, I think Congress is losing. But to think that it is Modi who is winning would be wrong, because in that case you would have to conclude Modi lost in Telangana. Yes, I don't think this would be a fair conclusion. Modi is not losing Telangana. I think what we have seen over the years, whether it was Bihar, Delhi, Bengal, or other places, or Haryana for that matter, Mr. Modi has been popular, has been winning parliamentary elections for his party. But he's not been able to carry state elections when the leadership is not good. The BJP is strong. The BJP has deep organizational roots. And when the Congress does not do something extraordinary, BJP manages to assert its organizational depth and strength, which is what seems to have happened, especially in Madhya Pradesh, where BJP's organizational roots are very, very deep. They go back to 60, 70 years. That seems to have asserted. I do not think it's you are right to say that it should not be seen as a victory for BJP leaders locally, because they were not quite prominent faces. The Prime Minister Shivraj Chauhan was not even mentioned in the speeches. Vasundhara Raje Scindia was clearly sidelined. In fact, sir, it was as if they were trying to go out of their way to destabilize the leadership, the regional leadership. That's how it looked from the way the strategy rolled out for Bharatiya Janata Party, isn't it? I would not say destabilize. I think the Bharatiya Janata Party leadership felt confident enough to think that they can do without the regional faces, and that they do not want competing regional faces to come up in politics. Shivraj Singh Chauhan, with 20 years of incumbency, could have been a face to reckon with at the national level. And BJP national leadership had decided not to allow regional centers to come up, and that seems to have worked. योगेंद्र जी, कुछ सवाल मैं आपसे हिंदी में भी पूछना चाहूंगा। मसलन के तौर पर अभी अगर हम 3 राज्य की बात करें, तेलंगाना में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है और वो अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 230 में से 153 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है।
राजस्थान में 199 में से 105 पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। और इनफैक्ट अभी जो आंकड़े मेरे सामने हैं, छत्तीसगढ़ में आगे पीछे का मामला है, आप समझ ले कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो इन तीन राज्यों को अगर मैं देखूं तो क्या यह माना जाए कि स्पेशली जो नॉर्थ बेल्ट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धीरे धीरे पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने में कामयाब रही है? आप ये मानते हैं कि नॉर्थन बेल्ट में बीजेपी एक बहुत कड़ा उनसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी? देखिए, स्थापित कर रही नहीं है, बीजेपी स्थापित है। बीजेपी यहाँ चुनाव, लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल पूरी तरह से झाड़ू लगा देती है और बीजेपी यहाँ एक बड़ी और स्थापित ताकत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सवाल ये था कि क्या कांग्रेस अपने राज का, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो उसने 5-5 साल राज किया है और मध्य प्रदेश में जो 15 महीने का राज करने का मौका मिला, क्या उसका फायदा उठाते हुए बीजेपी को हरा सकती है? जब चुनाव शुरू हुए तो तीनों राज्यों में संभावना थी कि कांग्रेस तीनों में बीजेपी को हरा सकती है। अब कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ का अभी भी अनिश्चय बना हुआ है। तो इस मायने में ये कांग्रेस के लिए स्पष्ट रूप से धक्का है, इसमें कोई इंकार हो ही नहीं सकता। और ये देखते हुए कि लोकसभा में बीजेपी की ताकत इन राज्यों में बढ़ेगी, घटेगी नहीं, तो ये चुनौती और भी ज्यादा बन जाती है और कांग्रेस को बिल्कुल कुछ नई किस्म की रणनीति के बारे में सोचना होगा, क्योंकि पुरानी किस्म की रणनीतियां काम नहीं कर रही। तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने नई किस्म की रणनीति अपनाई, नया नेतृत्व को दिया, नई ऊर्जा को जगह दी, वहां कांग्रेस सफल हो रही है। तो मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए एक विशेष संकेत हो सकता है। आपने नेतृत्व का बात किया, उस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि नेतृत्व, जो पुराने नेतृत्व है, खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, तो उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत थी, या फिर नए लोगों को, जैसे तेलंगाना में हमने देखा रेवंत रेड्डी को कितनी जिम्मेदारी दी गई, तो इस तरीके से क्या कांग्रेस को अब अपने भविष्य को लेकर या अपने नए नेताओं को बाहर लाने की जरूरत है? नंबर एक। और नंबर दो, अगर इसी तरीके के नतीजे आते हैं, और हमने देखा मध्य प्रदेश में तो अखिलेश यादव भी चुनाव के लिए उतरते हैं और भी लोग उतरते हैं, तो इंडिया गठबंधन पर इसका किस तरह से असर आप देखते हैं? अगर नतीजे इसी तरीके से आए तो 2024 के चुनाव में एंटर करने के समय इंडिया गठबंधन को भी क्या फिर से अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने या उसे एक बार फिर से रीइन्वेंट करने की जरूरत है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, हालांकि उनका झगड़ा बहुत बड़ा दिखाई दिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के न जुड़ने की वजह से कोई कांग्रेस हारा। अगर गठबंधन का ज्यादा असर था तो वो राजस्थान में था, जहां भारतीय आदिवासी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन दोनों से गठबंधन न करने का एक निर्णायक असर पड़ा होगा। ऐसी मेरी रीडिंग है, ऐसा मुझे महसूस होता है। इंडिया गठबंधन के लिए 2-3 इम्प्लीकेशंस क्लियर हैं कि इससे कांग्रेस की जो ताकत है इंडिया गठबंधन के भीतर वो कुछ कम होगी। हालांकि तेलंगाना में जीतने की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन कुल मिला के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जिस तरह का वर्चस्व हो सकता था, अगर वो इन 3 में से 2 चुनाव जीत लेती, 3 उत्तर भारत के राज्यों में, वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि चाहे आप कम भी मार्जिन से हारे, हार तो हार होती है चुनाव। और इसलिए कांग्रेस को अब गठबंधन के बाकी सहयोगियों के साथ बराबरी के साथ टेबल पे बैठ के बात करना होगा। इससे वैसे इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत होती और दूसरों को के साथ कहीं एक जोर जबरदस्ती का व्यवहार होता तो उससे इंडिया गठबंधन के टूटने की संभावना ज्यादा थी। तो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी थोड़ा बराबरी की स्थिति में हो तो उससे गठबंधन बनाने में शायद आसानी हो, मगर इससे कांग्रेस को जरूर नुकसान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये महत्वपूर्ण है सर कि इससे पहले कि मैं पैनल में दूसरे लोगों को मौका दूं, एक सवाल जो और पूछना चाहता था मैं आपसे, क्योंकि आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, मैं आपसे भारत जोड़ो यात्रा के समय भी मिला था, और जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई तब ये भी कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने एक अहम भूमिका निभाई। तो अब जब ऐसे राज्य जहां पर माना जा रहा था, राजस्थान में अशोक गहलोत एक बहुत बड़े नाम है, या मध्य प्रदेश में आकलन तो ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो दिख रहा है उससे काफी बेहतर रहने वाला है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार केवल स्थानीय नेताओं को मानते हैं या फिर नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस को अपने आप को
फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है? राहुल गांधी को अपनी टीम को फिर से बनाने की जरूरत है? कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ, और मेरी समझ है तेलंगाना में भी भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ। ये फायदा मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्यों नहीं हो पाया जहां से ये यात्रा गुजरी थी, ये सवाल है। और इससे केंद्रीय नेतृत्व हट नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस में राज्य का जो नेतृत्व है वो अंततः केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला कर रहा है। तो राज्य का नेतृत्व क्या है और क्या बनता है, अगर रेवंत रेड्डी को बनाने का श्रेय कांग्रेस के नेतृत्व को मिलेगा, तो पुराने नेतृत्व को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस नेतृत्व को ही लेनी पड़ेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सवाल केवल नेतृत्व का नहीं था मेरे विचार से। ऐसा नहीं, हम राजनीति को केवल नेताओं के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल नेतृत्व बदल। राजस्थान में नेतृत्व बदलने का तो सवाल ही नहीं था, अशोक गहलोत थे वहां मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन कांग्रेस अच्छी योजनाएं बनाकर भी चुनाव क्यों हार जाती है, तीसरी बार ऐसा राजस्थान में हो रहा। इसके बारे में केवल राजस्थान के नेतृत्व को नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है कि तमाम एमएलए जिनके विरुद्ध इनकम्बेंसी थी उन्हें फिर टिकट मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि जो गठबंधन आसानी से हो सकते थे वो नहीं किए जाते? इन सवालों का जवाब तो ढूंढना होगा, और इसकी जिम्मेवारी केवल राज्य नेतृत्व पे नहीं।